Can we have the next pin, please? So these are 200 Riyals gift vouchers from Lulu. Gaurav Bhatyani. Is he in? Okay, we have a winner here. Please come in. Kishore. Thank you. Congratulations. So now we have almost near the end of our conference, but as they say, the best is always saved for the last. Don't you agree? So we have the last two sessions, and I believe they are the sessions of this conference for which the audience is waiting for a long time.
Good evening, members. As it was, we just now heard that trust comes with delivery, and we make sure that we deliver the best in this conference. Just कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है. The effort put in by your executive committee resonates deeply with these words, and we feel immense grateful for the appreciation shown by all of you. As we come to the grand finale of this remarkable conference, it's time to illuminate the stage with the brilliance of Bollywood. Much like the world of startups, the film industry is also about reinvention, risk, and relentless drive to create something new. From business to Bollywood, both teaches us invaluable lessons about dream, resilience, and the art of constantly reinventing oneself. Much like how startups create disruptions and define new trends, this powerhouse personality has been a true game changer in the film industry, redefining success with every role and always pushing the boundaries of creativity and excellence. Can I have the AV, please? Vivek Anand Oberoi, a versatile talent, has made significant contributions to Indian cinema, entrepreneurship, and philanthropy. As managing director and co-founder at B&W Developments, he oversees various ventures with a strong focus on ethical and sustainable business practices. In his acting career, Vivek has starred in over 47 films across 7 languages, earning critical acclaim for his diverse roles in both commercial and independent cinema. His portrayal of characters in films like Company, Satya, Omkara, and Rakt Charitra cemented his reputation as a versatile actor. Vivek's digital series Inside Edge garnered an International Emmy nomination, showcasing his ability to transition seamlessly between traditional and digital platforms. Beyond the screen, he is an influential philanthropist. Recognized by Forbes as one of the top 40 global philanthropists, he founded projects like the Devi Initiative, providing support for underprivileged girls, and works extensively with Cancer Patients Aid Association. His family office oversees multiple ventures, blending his business acumen with his dedication to social causes, making him a dynamic figure in entertainment, business, and humanitarian work. And with that, I leave you with these words. ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अब शुरू होती है. Members, let's give a roaring, electrifying welcome to one and only Vivek Oberoi. कुछ अलग ही होता है.
Vivek Anand Oberoi, a versatile talent, has made significant contributions to Indian cinema, entrepreneurship, and philanthropy. As managing director and co-founder at B&W Developments, he oversees various ventures with a strong focus on ethical and sustainable business practices. In his acting career, Vivek has starred in over 47 films across 7 languages, earning critical acclaim for his diverse roles in both commercial and independent cinema. His portrayal of characters in films like Company, Satya, Omkara, and Rakt Charitra cemented his reputation as a versatile actor. Vivek's digital series Inside Edge garnered an International Emmy nomination, showcasing his ability to transition seamlessly between traditional and digital platforms. Beyond the screen, he is an influential philanthropist. Recognized by Forbes as one of the top 40 global philanthropists, he founded projects like the Devi Initiative, providing support for underprivileged girls, and works extensively with Cancer Patients Aid Association. His family office oversees multiple ventures, blending his business acumen with his dedication to social causes, making him a dynamic figure in entertainment, business, and humanitarian work. We request Mr. Vivek Oberoi to come on the stage. Thank you so much for that warm introduction. Namaskar, Jai Hind. As today's topic is startups, I'd like to begin by saying I'm completely spellbound because I was asking Kamlesh Bhai just few seconds ago कि ये जो मेरे introduction में आवाज है ये किसकी है? Who just spoke about me? Whose voice is this? And he said it's AI. I asked him 3 times. He said, Sachi, AI. Because it sounded so Indian, it sounded so natural, it sounded so incredible. So the world is moving very, very fast. In a fast-paced world, how do we adapt? How do we grow? And, you know, we remember to do a lot of things in life in terms of charging all our devices that keep us connected. Charging the mobile phone. I'm right now borrowing Jay's charger to charge my mobile phone, charging the laptop, etc., etc. And all of it is to stay connected. But then what do we do to charge ourselves, our spirit, our inner child? And how do we stay connected with the things that really matter? How do we stay connected with family? Really connected, not just कैसा है, ठीक है, खाना खाया, school कैसा था, you know, how was your day at work, everything okay? But really stay connected, right? So many times my children are only 11 and 9. And so many times it's accidental that I discover, खासकर जब छुट्टी पे जाते हैं, when I go to, spend some time with them on a holiday and I observe, or I actually spend time with them, ask questions, or I share an experience, I discover something that my child has grown into that I missed out. And I realized how I need to be more connected. Do any of you feel the same way? With your loved ones? And sometimes with ourselves also, right? We tend to react to something. कोई फिल्म देख रहे हैं, suddenly एक emotion आ गया, suddenly माँ डैड की याद आ गई, बहुत दिन से बात नहीं किया मम्मी से, आज फोन करके लंबी बात कर लेता हूँ. Do we feel that? Right? कोई गाना सुन लिया, कोई पुराने दोस्त याद आ गए, कोई स्कूल रियूनियन हो गया या सीए चैप्टर के कुछ पुराने दोस्त मिल गए आर्टिकलशिप के ज़माने से. And you remember the old memories. And that's when you realize how sometimes we are not even connected to ourselves. See, God has been very kind. I've had a crazy journey.
I started out my business career before my film career. Not many people know about it. And it started out quite accidentally. And CAs have had a tremendous, role to play in my life. I feel that if a business is a car trying to win a race, and if the startup founder, business promoter, CEO is the driver, then the person who sits next to you with a map, the navigator, telling you not to take the wrong left turn or the wrong right turn, which way to go, is the CA. They don't always get the glory. They're not there standing on the podium with the champagne bottle winning the gold medal. But they have a tremendous contribution, and that's why I always respect CAs. I jokingly say, because I'm surrounded by CAs, my partner in BMW, Ankur Agarwal, is a brilliant CA, an incredible story himself of success. Yadu Mittal, who's part of my team sitting here, he's a CA. Jay, because of whom I've flown down from New York here to be at this event on his insistence, is also a CA. So I'm surrounded by CAs. So I jokingly say, मैं खुद CA हूँ. तो लोग बोलते हैं भाई CA कैसे हुए? मैंने कहा सिनेमा एक्टर, हम भी CA हैं. So with the help of CAs like yourself, I started my journey very, very long ago. And like many things happen in life, it all started with a girl. I'd come back from boarding school, Mayo College. Anybody's heard of Mayo College? Rajasthan, Ajmer. Mayo में पढ़ाई कर रहा था. तो मेयो में सिस्टम ये होता था कि बड़ा अच्छा कॉलेज था, बड़ा अच्छा स्कूल था, पर हम अपने एक बबल में रहते थे. We were all insulated in our own world. किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, we used to just go to the store, साइन कर देते थे, चीज़ ले लेते थे. तो हमें लगता था ऐसी चीज़ें ली जाती हैं, साइन कर दो, मिल गया. कौन बिल भर रहा है पीछे से, कौन मंथली रेगुलरली चेक्स क्लियर कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं. किस चीज़ की कॉस्ट क्या है. जूते फट गए, नए जूते ले लो. कपड़े पुराने हो गए, नए कपड़े ले लो, स्टोर पे साइन कर दो, हो गया सब. बोर्डिंग स्कूल था. सो दैट वाज व्हाट इट वाज. व्हेन आई केम बैक टू मुंबई, माय फादर सेड टू मी, ही सेड कि भाई अब नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन एक्सपेंसेस, टेल मी व्हाट पॉकेट मनी यू वांट. अब कोई हिसाब ही नहीं, दाल आटे का भाव पता ही नहीं, ये पॉकेट मनी क्या मांगनी चाहिए. मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है क्या 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 होनी चाहिए पॉकेट मनी. इसे नहीं, आप बताओ आपके खर्चे वर्चे क्या होने वाले हैं. यू हैव टू गो टू कॉलेज अप एंड डाउन. Because my father was very clear from childhood, and I thank him a lot for this. He said कि देखो, you are the son of a rich man, but you are not a rich man. ये ग्राउंडिंग उन्होंने बचपन में मुझे दे दी थी. तुम्हें अपना पैसा खुद कमाना है भाई. मैं हूँ, सपोर्ट करूँगा. यू विल हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. सबसे अच्छा खाना होगा, सबसे अच्छा एजुकेशन होगा, सबसे अच्छी सिक्योरिटी होगी. घर पे 3 गाड़ियाँ 3 ड्राइवर हैं, लेकिन तुम कॉलेज जाओगे बस से, ट्रेन से ट्रैवल करोगे. यू हैव टू टफन अप, यू हैव टू लर्न लाइफ. तो आफ्टर अ वेरी कैजुअल 2 सेकेंड थॉट आई सेड 500 रुपये. ही सेड महीना. ऐसा हाँ 500 रुपये महीना ठीक है. तो उन्होंने कहा चलो डन. ही शुक माई हैंड. ही सेड 500 रुपये महीना, दिस इज योर पॉकेट मनी. फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज सारे दोस्त आए, बोले यार एक सोशल हो रहा है. सोशल क्या होता था कॉलेजेस में? क्योंकि हमारे यहाँ तब, आई एम काइंड ऑफ ओल्ड, सो हमारे यहाँ तब हमारी उम्र के लोगों को, आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड, नाइट क्लब्स वगैरह में तो एंट्री नहीं मिलती थी. यू हैड टू बी 18+ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो कॉलेज के अंदर कुछ लोगों ने बड़े क्रिएटिवली, ऑर्गेनाइजर्स ने एक दिमाग लगाया है कि दिन के समय एक 5 स्टार होटल में एक बैंक्वेट हॉल बुक किया जाए. उस बैंक्वेट हॉल में हम बच्चों को दोपहर के समय कॉलेज बंक करा के पार्टी कराने के लिए लेके आएंगे. डीजे होगा, नाइट क्लब की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, डिस्को बॉल होगा, लाइट्स होंगी. तो सारे बच्चे सोशल के लिए जाते थे 12 बजे और निपट जाता था 4 बजे. और सिस्टम क्या होता था कि मतलब सब आते थे, गर्ल्स भी आती थी, तो आए कॉलेज सलवार कुर्ता पहन के, और सोशल के अंदर उतरे, होटल के बैंक्वेट हॉल के अंदर लेडीज़ रेस्ट रूम में गए और बाहर निकल के आई मिनी ड्रेस में, और सब चल रहा है सोशल.
तो हमारा भी ये लगता है भाई, सब बोल रहे सोशल सोशल, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी, उसने कहा वुड यू लाइक टू गो विथ मी। मैंने कहा यार नेकी और पूछ पूछ, बोर्डिंग स्कूल से आया हूँ ऑल बॉयज से, सो प्रिटी गर्ल आस्किंग मी आउट ऑन अ डेट, वंडरफुल। सो आई वेंट आउट विथ हर। सोशल के लिए गए। सोशल पे पहुंचने के बाद पहले सोचना चाहिए था, लेकिन पता चला वहाँ पे 150-150 रुपए की तो एंट्री फी है। बजट क्या था महीने का, 7वां दिन 8वां दिन महीने का, तो 300 रुपये तो वहीं कट गए। और उन्होंने सामने से कूपन दे दिया। कूपन में एक फील गुड फैक्टर आया कि भाई ठीक है 300 रुपये एंट्री कॉस्ट नहीं है, कूपन में हम रिडीम कर सकते हैं, कुछ इसमें पीने के लिए खाने के लिए ले सकते हैं। वो इतनी पतली खूबसूरत लड़की कब सारे कूपन चट कर गई पता नहीं चला। अच्छा 4 बजे निपट गया। मैंने कहा ठीक है 200 रुपये तो जेब में है। उसने कहा आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने कहा नहीं, वो कॉलेज के सामने है ना वड़ा पाव की दुकान, बहुत अच्छी है। तो कहने लगे कि अब थोड़ा सा फील होने लग गया जेब। कहने लगे नो नो यू हैव नॉट बीन टू दिस रेस्टोरेंट हियर। मैंने कहा हियर 5 स्टार होटल में? कहते हाँ इट्स अ वेरी गुड होटल, इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, चलो इट्स राइट ओशियन फ्रंट पे, समुद्र के किनारे। अब वो इतने मुस्कुरा के कह रही थी, इतनी खूबसूरत भी थी कि अपन पिघल गए। चले गए उसके साथ में खाना खाने रेस्टोरेंट में। पहली बार लाइफ में मेन्यू आए दोनों तरफ, वो लेफ्ट साइड देख रही थी, मैं राइट साइड देख रहा था। वो अपना ऑर्डर करने लगे, शी स्टार्टेड ऑर्डरिंग हर फूड। मेरे फास्ट मैथमेटिक्स अकाउंटिंग की कैलकुलेशन चलने लग गए कि भैया कितना जा रहा है कितना जा रहा है कितना जा रहा है। मेरी फाइनल प्रेयर तो यही थी कि ऐसा ना हो कि पूरे 200 रुपये खत्म हो जाएं, बैंड बज जाएगी। तो उसने सैंडविच वैंडविच कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब मंगाया। मेरे को पूछा व्हाट अबाउट यू। मैंने कहा आई एम नॉट हंग्री। जैसे तैसे करके घर पहुंचा, आई टोल्ड माई फादर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विथ माई पेरेंट्स। हमारे घर में एक रूल है कि ब्रिंग एवरीथिंग होम, सही हो गलत हो, गलती हुई गड़बड़ हुई, घर आके बता दो। तो आई वेंट एंड आई सेड कि भाई डेट पे गया था, ऐसा ऐसा हुआ। तो डैड ने कहा बहुत अच्छा, लड़की खूबसूरत थी। मैंने कहा हाँ बहुत प्यारी है, वेरी नाइस। तो क्या करना है? तो मैंने कहा 500 रुपये तो ख़त्म हो गए। इट्स वेरी गुड, अभी 20 दिन बचे हैं महीने में, क्या करोगे? बोला क्या करोगे मतलब और पैसे दो, आपने मुझे कौन किया है? आप मुझे बताना चाहिए था आपको ये 500 रुपये बहुत कम है। भाई तुमने 500 मांगे, मैंने 500 दे दिए। अब बजट अनुसार चलना तुम्हारा काम था, अकाउंट्स तुमने क्यों नहीं देखे अपने? एंड आई फेल्ट अपसेट ऑल्सो, बट लॉजिक वॉज ऑल्सो राइट। तो ऐसे कल कॉलेज कैसे जाऊंगा? ही सेज फिगर इट आउट। तो लिटरली कुछ 4-5 दिन तो मैं कॉलेज वॉक करके गया, 5-6 किलोमीटर, पसीना, बॉम्बे की ह्यूमिड एयर, धुआं धूल। इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग। लंच ब्रेक में वड़ा पाव और चाय का तक बजट नहीं था। बट इट टॉट मी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू स्टिक टू अ बजट। एंड द सेकेंड थिंग इट टॉट मी, आई थिंक कहीं ना कहीं वो पंजाबियत, वो 15-16 उम्र की एक थोड़ी सी एरोगेंस ऑफ यूथ। तो पापा को कहीं मैंने गुस्से गुस्से में गर्मा गर्मी में 4-5वें दिन के बाद मैंने कहा यू नो व्हाट, आप नहीं दे रहे ना पैसे मुझे, आपसे आज से पैसे ही नहीं चाहिए आपसे, आप अपने 500 भी रख लो, आई विल फिगर इट आउट। ही सेड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो रिएक्शन चाहिए था वो तो नहीं मिला, ऑपोजिट हो गया। मैंने कहा बोल तो आ गया, डैड ने भी बोल दिया वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू, अब मैं क्या करूं? सो आई हैड टू फिगर थिंग्स आउट। I think when you are pushed to a situation like this, and we don't do that much to our children, हमें लगता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया जीवन में, बच्चों को थोड़ा और कंफर्टेबल कर देते हैं। But I thank my father so much. उस समय तो बहुत नाराज था मैं, but I thank him so much today. मैं हमेशा उनको फ़ोन करके इस कहानी के बारे में याद दिलाता हूँ कि he pushed me. वो पुश होने की वजह से क्या हुआ, I said यार इसका कुछ करना पड़ेगा। And I think I truly believe कि when you decide in your mind ना कि कुछ करना है, तो यूनिवर्स आपको आंसर दे देती है, एक अपॉर्चुनिटी फेंकती है, ले कर। तो मेरा एक दोस्त था, कह रहा था यार ये पूरा वैरायटी एंटरटेनमेंट शो हो रहा है मिठी बाई कॉलेज के बिल्कुल बगल में भाईदास हॉल। इसे भाईदास हॉल में वैरायटी एंटरटेनमेंट शो हो रहा है। मैंने कहा भाई पूछ भी मत, फाके हैं, जेब खाली है, हालत ख़राब है, पैसे नहीं। अरे पैसे कौन मांग रहा है, आई नो द ऑर्गेनाइजर। ऐसे बढ़िया है। हम गए अंदर सोच के यार दोस्त का वट है, ऑर्गेनाइजर को जानता है, ही इज़ वेरी कनेक्टेड। हम गए,
ऑर्गेनाइजर ने हमें 30 सेकंड्स देखा भी नहीं, बोला हाँ हाँ अरे तुम लोग एक काम करो, वहाँ पीछे बैक स्टेज चले जाओ, कोने में देख के, कोने में खड़े रह के देख लेना और थोड़ा हेल्प आउट कर देना। मैंने कहा ये है तेरा, आई नो द ऑर्गेनाइजर। हम साइड में खड़े हैं ऐसे विंग्स में और शो सामने चल रहा है ऐसे, और हम ऐसे देख रहे हैं शो को। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एयर कंडीशन भाईदास हॉल, खूबसूरत लड़कियां वो फैशन शो कर रही हैं, टैलेंटेड लोग गाना बजा रहे हैं, यू नो दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। इट्स अ गुड स्टोरी। बैठते हैं, देखते हैं, 2-3 घंटा मन हल्का हो जाएगा। अब शो जब शुरू होने वाला था, बैक स्टेज मैंने देखा हलचल मच गई। हलचल मच गई, क्या हुआ? तो पता चला कि एक बहुत बड़े रेडियो जॉकी थे जो उस जमाने के एक रेडियो स्टार थे, वो आके होस्ट करने वाले थे। अब शायद उन्हें लगा होगा यार क्या कॉलेज फंक्शन है, क्या होस्ट करना, उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी तो चले गए। लास्ट मिनट में इनको पता चला कि देयर इज नोबडी टू होस्ट द शो। अब पैनिक है यार, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। मैं देखे जा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने कहा दिस कुड बी माई मोमेंट। तो मैंने कहा क्या करना है, होस्ट करना है ना शो, मैं कर लूँगा, आई विल डू इट। तो उसने मुझे पैनिक में लुक करते हुए देखा कि कर लोगे, इससे पहले किया है? इस मोमेंट मैंने उसको देख के जितना अंदर से कॉन्फिडेंस ला सकता था, कॉन्फिडेंस लाकर परफॉर्म करते हुए मैंने कहा अरे कितनी बार होस्ट किया है यार। और उस बेचारा डूबते को तिनके का सहारा, उसने बोला अच्छा ठीक है भाई, ठीक से कर लेना। और मैं चला गया होस्ट करने। बड़े कॉन्फिडेंटली शुरुआत की। कॉलेज शोज में एक मर्फीज लॉ चलता है दैट एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अब वार्डरोब मैल फंक्शन से लेके भाई अभी ये अनाउंस करना है, कोई और आ गया, फलां का वो सिस्टम रेडी नहीं है, वो टॉयलेट गया हुआ है, आपने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट परफॉर्मर इज, और मतलब आप लड़के का नाम अनाउंस करो, लड़की चल के आ रही है, मतलब ये सब हो रहा था वहां पे। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस आई स्टार्टेड सेइंग कि भाई लोग किस लिए आए हैं? एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। आई स्टार्ट एंटरटेनिंग देम। तो आई स्टार्टेड मेकिंग फन, आई स्टार्टेड जोकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन स्टेज। बीच बीच में चुटकुले भी देने लग गया। अब रिस्पॉन्स आ रहा था, फीडबैक जबरदस्त आ रहा था ऑडियंस से, तो मैं और जोक पे जोक कुछ ना कुछ करते जा रहा था। बाय द एंड ऑफ द शो मजा ये आ गया कि एवरी टाइम आई वुड कम ऑन स्टेज लाइक अ फिलर और गैप, सीटियां बजने लग गई, तालियां बजने लगी। मैंने कहा यार जबरदस्त, फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। At the end of the show, I still remember that was the first autograph I ever signed in my life. A girl came up to me and says, I don't know your name, but I want your autograph. मैं कहा ठीक है, ये मेरा नाम है, ये मेरा autograph है। I signed my first autograph in that moment. अब शो खत्म हुआ, बंदा आया मेरे पास, ऑर्गेनाइजर, कहने लगा यार तू तो कमाल किया तूने काम। Look, I do about 2 shows every month. I will commit to you. 3 months में I will give you at least 6 shows. You come on board, you work with me. बट देख यार ये शो थोड़ा लास्ट मिनट था, पैसे की बात अपनी हुई नहीं थी, तो इस शो के लिए ना मैं तुझे हाफ बजट दूंगा, अगले शो से फुल बजट। अब मुझे पता भी नहीं है कि कितने पैसे देने वाला है, और मैं अपना नेगोशिएटिंग टैक्टिक शुरू करा। अरे नहीं यार ये तो गलत है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, हाफ बजट क्यों दे रहे हो? मुझे पता भी नहीं है कि क्या देने वाला है। यार ठीक है यार, मान लेना, आई एम डूइंग लॉन्ग टर्म डील विथ यू। मगर अच्छा ठीक है यार, जो भी है। तो उसने निकाली गट्टी और 2500 रुपये मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि 5 महीने की पॉकेट मनी 2-2.5 घंटे के मजे के लिए, आओ जोक्स करो, मस्ती करो। यार ये तो जबरदस्त, दिस बिजनेस इज सुपर्ब यार, शो बिजनेस इज अमेजिंग। तो 2500 लिए एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग. I started getting called for many shows, events. I started hosting professionally. Somebody who was seeing me hosting called me, said कि तुम रेडियो शो क्यों नहीं करते? तो मैं रेडियो शो करने चला गया. फिर रेडियो में किसी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा तुम जिंगल्स कर लो. एडवर्टाइजिंग में चला गया. फिर किसी ने एडवर्टाइजिंग से मुझे बोला कि यार यू नो लॉट ऑफ अमेरिकन शोज आर कमिंग टू इंडिया. वॉल्ट डिज्नी के कार्टून्स आ रहे हैं, उनकी हिंदी डब कर पाओगे क्या? तो मैं वहाँ डबिंग करने, हिंदी कार्टून की डबिंग करने चला गया. और वहाँ से फिर किसी ने मुझे देख के बोला यार तुम फिल्में भी कर लो. तो जितनी बड़ी बड़ी फिल्म आ रही थी, जुरासिक पार्क से लेके द रॉक से लेके बहुत सारी पिक्चरें आ रही थी. और फिर वो सारे शोज, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, स्मॉल वंडर, यंग एंड रेस्टलेस, वो सारे डब करने लग गया. बिफोर आई न्यू इट आई वॉज मेकिंग 50,000 to 60,000 रुपीज पर मंथ. डैड ने एक ही बार बुला के पूछा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? तो मैंने कहा नहीं.
But it made me independent. And that set my journey. By the time I was 17, I said, now I have my money. I want to invest. But I didn't want to invest just like that because now I valued that money. It wasn't signing at a store and पापा बिल भर देंगे. मैंने कमाया यार बड़ी मेहनत से, पापड़ बेल बेल के कमाया है. क्लास खत्म करो, कॉलेज फिनिश करो, फिर शाम को जाओ, दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, हम काम करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, बैंक अपना अकाउंट खोल रहे हैं, एटीएम कार्ड. आई वाज द ओनली गाय इन माय क्लास हु हैड हिज ओन एटीएम कार्ड, और वो भी अपने पैसों का. सो आई एक्चुअली वेंट टू अप्रेंटिस एंड लर्न अंडर अ स्टॉक ब्रोकर. आई सेड मुझे सीखना है ताकि मैं मिस्टेक नहीं करूं. So I learned from a stockbroker. I went and apprenticed and learned commodities because I wanted to trade in commodities. Oil used to be, I think, $20 a barrel back then. And I understood what hedging was, cross-currency hedging, cross-commodity hedging. I learned those things by doing. And by the time I was 19 years old, with the help of a few good CAs, I set up India's first supercritical fluid extraction plant. And I was always very interested in technology and innovation. In those days, startups weren't called startups, and exits weren't called exits. I raised 12 crores. $1 million used to be about 4 crores at that time. 4.25 crore pe. I raised 12 crores with barely 1 lakh rupee of my own, which I actually invested in a very solid financial report. Convinced people, ran the business successfully, set it up in Bangalore, put up a team, would go up and down, college भी कर रहा था, business भी कर रहा था, train से जाता था, पहुंचता था. At the age of 22, I sold that business and made every single one of my investors money, including myself. That journey would have never been complete. I would have never felt that confidence that I can do all this if my father had said, ये ले और 500 रुपए. I think that is what being connected is truly about. And I felt like sharing that today with all of you, that, this has been my journey in terms of business. Because I believe that as Indians, हमारे DNA में है, हम किसी भी चीज़ का धंधा बना लेते हैं. और जितने सीए हैं वो कोई भी टाइप का धंधा समझ लेते हैं और समझा भी लेते हैं. यूनिवर्सल है. एक joke I'd like to share. एक ट्रेन में देसी बंदा बैठा हुआ था, उसके बगल में ब्रूस ली आके बैठ गया. अब सबको लग रही थी भूख, इंडियन रेलवेज ने खाना वाना टिफिन विफिन घुमाया नहीं. एक मच्छर आया कैबिन में, भिनभिनाने लग गया. अब ब्रूस ली ने अपने लाइटनिंग फास्ट रिएक्शंस में जाके मच्छर को हवा में ऐसे पकड़ा और मुंह में डाल के चबाने लग गया. अब देसी भाई बीच में बैठा हुआ है, देख के शॉक में है कि यार कर क्या रहा है ये ब्रूस ली, मच्छर खा रहा है, ये क्या हो रहा है. दूसरा मच्छर आया, बिन बनाने लगे. ये लपक के ब्रूस ली ने पकड़ा उस मच्छर को और मुंह में डाला, चबाने लग गया चने की तरह. अब देसी बंदा बहुत इंटेंटली स्टेयर कर रहा है, फोकस में आ गया अब वो कि हो क्या रहा है भाई ये. और जैसे ही तीसरा मच्छर आया, ब्रूस ली हिले उससे पहले देसी ने मच्छर पकड़ा, हाथ में लिया और ब्रूस ली को पूछा कितने में खरीदेगा भाई. तो धंधा अपने डीएनए में. बट एक चीज जो अपने डीएनए में है, जो हम शायद थोड़ा सा भूल रहे हैं. धंधे में हम बहुत तेज हो गए हैं भाई, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच जाएंगे. बट एक चीज जो हम भूल गए, जो अपने डीएनए में, हमारे संस्कारों में है, वो दान. द एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज वेरी क्लियर. वी आर ऑल वंडरफुल एट इन्वेस्टिंग. All your clients, all the UHNIs, every corporate that you advise comes to you for investment advisory. And you are the masters, telling them what is a good investment, what is a bad investment, how to secure, what are good returns, what are bad returns. We're all very good investors. But the one thing that we have forgotten is karmic investing. Do you agree with me? Karmic investing? Where that wealth is beyond the unit of money, where that wealth is beyond something transient, something numerical and digital in a bank account. It is a wealth you actually feel, because it goes beyond your body, it goes to your spirit. Karmic investing. And I believe it carries forward
into our generations because they see us doing it. So, I've had some incredible experiences. I think it was 2008 where I went to Banke Bihari Mandir. How many of you have seen Banke Bihari Mandir? Vrindavan mein. Radhe Radhe. So I went to Banke Bihari Mandir. और वहाँ पे एक 56 भोग पूजा होती है. और मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगता था 56 भोग मिठाई वाला है. तो ये पूजा होती है. यहाँ से इसकी प्रथा शुरू हुई. मैंने कहा करते हैं 56 भोग पूजा. बैठे, पूजा की. पुजारी साहब आए. उन्होंने कहा कि लल्ला बहुत खुश हैं, पूजा बहुत सफल रही. जैसे कि लल्ला ने उन्हें ऊपर से फ़ोन करके बोला हो कि बढ़िया गया है, मांग लो जो मांगना है. अब किवाड़ बंद थे, द कर्टन्स वर पुट एंड अंदर प्रेयर चल रही थी. अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मांगूँ, क्या मांगूँ. शुड आई आस्क फॉर अ बिग हिट मूवी? शुड आई आस्क फॉर मोर मनी? शुड आई आस्क फॉर सक्सेस इन बिजनेस? व्हाट शुड आई आस्क फॉर मोर? क्या मांगूँ मैं? और जब मैं ये सोच रहा था क्या मांगूँ, किवाड़ खुला एंड एक एनर्जी का वेव मुझे लगा. आंखों में से पता नहीं क्यों आंसू बहने लग गए अपने आप. और मेरे मन से, मेरी अंतरात्मा से एक ही आवाज निकलती गई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. शुक्र है भगवान तेरा, इतना कुछ दिया है. मैं वो सोचने लग गया, मैं वो याद करने लग गया कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है. मैं किस फॉर्चुनेट जगह पे हूं आज. और मेरे मन से भावना उठी कि अगर कुछ देना है भगवान तो मुझे सेवा का मौका देना. गिव मी सेवा. अच्छा, कृष्ण भगवान की क्या चीज़ है कि वो लीला उनकी बहुत ज़बरदस्त है. नाम राम लीला है लेकिन है कृष्ण लीला सबसे ज़्यादा स्ट्रांग. और युक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है उनकी. अब मैं बोल के वहाँ फंस गया क्योंकि जैसे मैं बाहर निकला हूँ बांके बिहारी मंदिर से, सिक्योरिटी वाले आए, सब ने मुझे कॉर्डन ऑफ किया. लोग मांग रहे हैं फोटो फोटो फोटो. रश चल रहा है पूरा. क्राउड में निकल रहा हूँ मैं. गाड़ियों का काफिला है. गाड़ी की काफिला के अंदर बैठ रहा हूँ मैं. लोग चिल्ला रहे हैं. कोई फोटो मांग रहा है, कोई आई लव यू चिल्ला रहा है. और मैं एकदम एक जोन में चला गया था कि जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट क्राउडेड स्पेस. मुझे बार बार से पीछे से एक आवाज आ रही थी, एक बड़े अजीब से एक्सेंट में, विवेक भैया, विवेक भैया, विवेक भैया, आई नीड योर हेल्प विवेक भैया, आई नीड योर हेल्प विवेक भैया. तो मेरे नजर पड़ी एक आदमी, मतलब पीछे उसकी शिखा बांधी हुई है, एक कुर्ता, कुर्ते के ऊपर खादी जैकेट, नीचे धोती, पर है गोरा फिरंगी. अब मैंने उनको ऐसे ही हाथ करके गाड़ी के पास बुलाया because I was sitting in the car. He came to me. He said, I need your help. अब अपन रहे ट्रांजैक्शनल आदमी, सीधा हाथ गया वॉलेट पे. हेल्प मतलब क्या? पैसा निकाल के दो. He looked at me and said, I didn't ask for your money. I said, I need your help. अब ये मुझे झटका लगा. अभी मैं अंदर कुछ बोल के आया हूं, सेवा का मौका देना. अभी कोई आके मुझे बोल रहा है पैसा नहीं चाहिए, मदद चाहिए. मैंने कहा यस टेल मी. शोर मच रहा है, सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं सर निकलना पड़ेगा यहाँ से, बहुत क्राउड हो गया है, निकलना. आई सेड नो, टेल मी, टेल मी. सेड ब्रदर, इफ यू डोंट हेल्प मी नाउ, मेनी यंग गर्ल्स विल बी सोल्ड इनटू चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बाय टुमारो. तो मुझे झटका लगा, सेकंड झटका. व्हाट डू यू मीन? ही सेड just a few kilometers from here, we have found them, we need your help rescuing them. They are very powerful people, and if you don't come, they will be gone forever. अब मैं सोच रहा हूँ कैसे हो सकता है यार, हम वृंदावन में हैं, दिल्ली से 2-3 घंटे दूर हैं, कोई रिमोट इलाका तो है नहीं. ये मतलब खराब सी 80s की पिक्चर का प्लॉट लग रहा है, रियल तो हो ही नहीं सकता ये. बट बार बार अंदर से वो आवाज आ रही थी कि यार तूने अंदर क्या बोला अभी, तूने कृष्ण भगवान को बोला क्या अभी? तूने बोला सेवा का मौका देना, मांगा था ना, मौका मिल रहा है. तो मैंने कहा चलो, आई वॉन्ट टू सी दिस. अब सिक्योरिटी वाले लोकल थे, कहने लग गए कि सर नहीं, वहाँ बहुत सकरी गलियाँ हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाएगी गाड़ियाँ, गाड़ी भी नहीं जा सकती अंदर. तो मैं कहा रिक्शे रोको, फिर रिक्शे में जाएंगे. तो वो परेशान बेचारे कि इतने क्राउड के बीच में अब रिक्शे में बैठ रहे हैं.
तुम जैसे तैसे करके वहां पहुंचे और वो दिन मेरे जीवन का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, वेयर आई एक्चुअली सॉ नेगेटिव वे में व्हाट ह्यूमंस कैन बी केपेबल ऑफ। मतलब हमें बचपन में सिखाया जाता है कि देवता ऐसे होते हैं, राक्षस ऐसे होते हैं, राक्षस के सर पे सींग होते हैं, ये बड़े बड़े दांत होते हैं। बट ये सच नहीं है, क्योंकि राक्षस भी हमारी तरह ही दिखते हैं और देवता भी हमारी तरह दिखते हैं। वी लुक द सेम। हमारे कर्म, व्हाट वी डू मेक्स अस देवता और राक्षस। क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने इस स्टेज से छोटे कमरे में, लेस देन दिस स्टेज, इस स्टेज से छोटे कमरे में जो टिन का बना हुआ था, टीन की पत्रियों का, यूपी में वृंदावन की गर्मी में आप सोचिए, टीन की पत्रियों जैसे कमरा, the only access to air and light were holes in the tin. That's it. And when I entered there, I was in shock. There were 33 girls in a small room kept worse than you would keep animals. They were sleeping there, sitting there, eating there, defecating there. They had not been out of that room for days, waiting to be transported. The eldest was 13, the youngest was 5. It broke my heart. First was a wave of anger. बड़ा गुस्सा आया मुझे, हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है, प्रशासन को फोन करो, मीडिया को बुला दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, बड़ा गुस्सा आया मुझे। बट बाद में मेरी रियलाइजेशन हुई कि ये सारी एनर्जी मुझे चैनल करनी है पॉजिटिवली। मुझे न सिर्फ इन बच्चों को संभालना है, बट इन बच्चों को संभालते हुए एक स्ट्रक्चर बनाना है जिससे ऐसे कई बच्चियों को, शायद सारी बच्चियों को हम जीवन में ना रेस्क्यू कर पाए, बट कई बच्चियों को मुझे रेस्क्यू करना है। उस मोमेंट में आई रिमेंबर्ड बांके बिहारी। आई सेड, देखो मैं छलांग लगा रहा हूं, आ गए ये, प्रोटेक्ट आपको करना है मुझे, सपोर्ट आपको देना है मुझे, आई एम गोइंग टू टेक इट। मैं डिसीजन ले रहा हूं, मैं जंप मारने वाला हूं, पीछे आप खड़े हो, आप ही ने भेजा है मुझे। एंड मैजिक स्टार्टेड हैपनिंग। Many of the girls we were able to reunite with their families from 6-7 states. किसी को कोई अगवा करके ले आया है, किसी का तो घर के पहचान वाला रिश्तेदार। और एक की तो कहानी इतनी खराब थी, वेस्ट बंगाल से एक बच्ची थी जिसका मैंने, फादर आया रोने लग गया मेरे सामने। मैंने कहा, हाउ कैन यू डू दिस, कैसे कर सकते हो, आप इंसान हो क्या, हो जानवर हो, अपनी बेटी को बेचा है आप। कहता, साहब मैंने ये सोचा कि मेरे 5 बच्चे हैं, खिला तो मैं 2 को भी नहीं पा रहा हूं, एक कम हो जाएगा तो कम से कम जो 5,000 रुपये दे गया है इसके लिए, 5,000 रुपये में खरीद गया बच्ची को, वो उसे जिंदा तो रखेगा कि 5,000 रुपये उसने दिए हैं, कुछ खिलाएगा तो सही, मेरे यहाँ रहेगी तो ऐसे ही मर जाएगी। अब आप इसको जज कैसे करो, डांटो कैसे किसी को जब उसने आपको ये कहानी बता दी, इतनी गुर्बत, इतना दुख, इतना दर्द। एंड दैट्स व्हेन आई सेट अप समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट देवी। एंड द रीजन आई चोज द नेम देवी वाज कि a lot of these girls started feeling कि हम गंदे हैं, हम पापी हैं, हमने पाप किया। बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट बेचारियों का इतने इनोसेंट है ना, इतनी यंग एज में, they did not feel like victims, they felt defouled, they felt dirty. I wanted to inspire them, so I created a title called Devi, which had a full form, Development and Empowerment of Vrindavan Girls Initiative, DEVI. And when you take that step, like I said, magic starts to happen. I took that step. I said, let's get a place, a center. There I found there are many mothers or ladies, young ladies, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें बांझ कहा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली समाज उन्हें भीख मांगने के लिए मंदिरों के सामने छोड़ जाता है। औरत को टेस्ट किया जाए नहीं किया जाए वो अलग बात है, लेकिन मर्द को कभी टेस्ट नहीं करते हैं कि इनफर्टिलिटी किसके यहाँ है।
तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग दीज लेडीज. आई सेड मैं महीने के आपको एक सैलरी दूंगा, अब आपके एक नहीं 16-17 बच्चे हैं, इनको संभालोगे आप? एंड दे सेड, मतलब रो के खुशी के आंसू. दे कनेक्टेड, दे फेल्ट लाइक दीज आर आवर ओन चिल्ड्रन. सो वी स्टार्टेड विद 3 लेडीज, 16-17 गर्ल्स. बाकियों को हमने रीयूनाइट कर दिया फैमिली के साथ में. वी स्टार्टेड एम्पावरिंग देम विद फ्री फूड, फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर. It wasn't an easy journey. We went through some crazy experiences. For example, there was a girl जिसकी एक स्किन कंडीशन डेवलप हो गई थी. अब स्किन कंडीशन इसकी ठीक ही ना हो, टॉपिकल एप्लीकेशन हम लगाते जाएं स्किन के ऊपर, मेडिसिन लाते जाएं स्किन के ऊपर, बट वो रैशेस, वो जो एक रप्चरिंग ऑफ स्किन, वो ठीक ही नहीं हो. बाद में, बिकॉज आई इन्वॉल्व वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज अ साइकाइट्रिस्ट हु स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल ऑफ देम, वी फाउंड आउट दैट कपड़े धोने का ब्रश नहीं होता है. She used to scrub herself with that because she had been raped multiple times and she felt dirty. At the age of 12, 13, she thought that is the way to clean herself. So these are the kind of traumatic journeys we went through. But you know the bright side? The minute we built the first school, the minute we started giving these girls computers, training them in martial arts, classical music, singing, dancing, I wanted it to be like a private school. The kind of place where you would send your children or I would send my children. I wanted it to be that quality. Because जब हम दान करते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने पुरानी चीज़ें दे देते हैं, हम सस्ती चीज़ें दे देते हैं. हम अपने घर में बासमती खाएंगे लेकिन गरीब को देंगे तो टूटी हुई राइस. ये एक थोड़ी सी माइंडसेट है, इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. I said I want to give them the best. And जब मैंने वो संकल्प लिया, कहीं से लोग आने लग गए. बड़े प्राइवेट स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स, कृष्ण भक्त थे, बोलते हैं हम वृंदावन में रहेंगे, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, हम आपका हाथ बढ़ाते हैं, संभालते हैं, बच्चियों को हेल्प करते हैं. धीमे धीमे वो बच्चियां जो ABC नहीं जानती थी, कंप्यूटर्स में कोडिंग कर रही थी, स्टेट लेवल पे अवार्ड्स जीत रही थी. एंड इट स्टार्टेड टू चेंज देयर लाइव्स एंड फुलफिल माई लाइफ. द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी वॉज कि आसपास 14 गांव थे. उन गांव में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कॉलेज कर पाया, फुल एक ग्रेजुएशन कर पाया. हमारी बच्चियां न सिर्फ कॉलेज कर चुकी, बट के 55 ऐसी बच्चियां निकली हमारे बैचेस में से जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में UK, कनाडा, US पहुंच गई. घूमते घामते मुझे कहीं फोर्ब्स मैगजीन का कॉल आया, जस्ट व्हेन आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट फाइनेंशियली टू टेक द बर्डन, कि स्कूल तो बढ़ते जा रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर भी बनाना है, और बच्चियां आ रही हैं, गवर्नमेंट के बेचारे लोग, सोशल वर्कर्स, पुलिस वाले, जब कूड़े में पड़ी हुई बच्ची को वो रेस्क्यू करते थे, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर टू, बिकॉज अभी भी वो बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड वाली प्रॉब्लम्स खासकर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है. They instead of taking her to the government home, they would bring कि अपने पास, साहब आप ही संभाल लो. तो हमने क्रैश भी शुरू किया. करते करते आज हमारे पास शायद 55-60 लेडीज़ काम करती हैं. स्कूल के यूनिफॉर्म्स भी वही बनाती हैं, बच्चों का खाना भी वही बनाती हैं. All these women that were discarded, all these women that had no purpose and were sitting lifeless outside the temples begging, forced to beg, discarded from society. कि भाई अपशगुन है, बांझ है, अपशगुन है, इसका चेहरा नहीं देखना. वो सारी अब माएँ बन गई हैं, वो सारे अब वहाँ पे इतनी फुलफिलमेंट देख रही हैं, बच्चियों की जर्नी देख रही हैं, और खुद पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया उन्होंने. द फुलफिलमेंट आई फेल्ट फ्रॉम पुटिंग दिस प्रोजेक्ट टुगेदर वाज नेक्स्ट लेवल. You know, even when you look at people who have come from nothing, see, when you have a lot, you say मुझे करना है कुछ समाज के लिए. When you don't have anything, the fascinating thing is, depending on how Samaj has treated you, depending on how your society has taken care of you or neglected you, if you don't have anything, when you come from lack, you believe that since no one is taking care of me, it is my right to snatch. मेरा हक छीन के लूंगा मैं. मुझे मर्डर करना पड़े मैं मर्डर करूंगा, मुझे चोरी करनी पड़े मैं चोरी करूंगा. बट वही चीज़ को अगर आप फ्लिप कर दो, कि किसी ने आपकी मदद कर दी,
You come from nothing. You had a sense of lack. But there's such a beautiful, innate sense of thankfulness that comes, a sense of gratitude that comes. That when you ask any of my kids, if you ever go to Vrindavan, please go see my schools there. You ask any of my kids, beta, bade hoke kya karna hai? 9 out of 10 will tell you, bade hoke mujhe doctor banna hai, garibon ki seva karna hai. Teacher banna hai, garib bachchon ko free mein padhana hai. They come from nothing, they've had nothing. But the minute you give them a slight platform, a slight opportunity, a slight sense of security, they're ready to give back. And that magic is what we, sitting in this room, can enable. We can turn them into an army of good. A project that I started in 2008, which was of course helped when 2011 or 12, Forbes magazine, they reached out to me and they said, we sent a reporter, she researched everything, we found out that you're doing this, why haven't you spoken about it? Because I said, I don't believe in speaking, I believe in doing. So they said, would you mind if we feature it? I said, I'm not comfortable with publicizing it. And that lady, incredible US-based, New York-based lady, she said, I'd like to talk to you. Message pe baat chal rahi thi. She picked up the phone, she called me. And she said, do you know if you use this, you use the media, you tell people what you're doing, do you know how many more people will be inspired to do something similar? Maybe not to the scale you have done. Maybe join your story. Maybe reach out and do their own. But inspire people. Tell your story. And that's the first time I spoke about it. Forbes mein article chapa. Next thing I know, they named me 40 under 40 in philanthropy for impact because they had heard about what I had done during the tsunami 8 years before that, 2004, where I went and lived in Kadlur on a very badly impacted village and stayed there for 9.5 months and rebuilt 3 villages from scratch. So they'd heard that I've been doing this continuously. And my first corporate, I think it was Body Shop, reached out and said, we want to sponsor 100 girls. Companies, individuals, they just started coming. And I've never done charity or social responsible work, anything for social impact, any non-profit work by sitting on a board. I've never sat on an organization saying, "Bhai, ye meri committee hai, main chairman hu, main trustee hu, meri signature lagenge." Till date, it is run by volunteers, it is run by locals, it is involving younger generation people. A girl came from London once, she came to visit Vrindavan, she saw what was happening in our schools, she wrote back to her parents saying, I don't want to come back. I want to be here and train these girls. I want to be here and teach them English. I want to make their English better. So many incredible stories. And till today, my official title in Project Devi is Chief Bhaiya. You know, from 2008 to 24, in my journey, I've been very, very blessed. I've won a lot of awards. Filmfare, IFA, Stardust. I've won a lot of awards in my life. But to me, those awards are just memories of the past, accolades sitting on a shelf. नौकर आता है बेचारा, डस्टिंग वस्टिंग करता है, धूल मिट्टी हटाता है, वरना उस पर भी धूल जम जाती है अब तक. That's all they are. My greatest awards, my greatest living, breathing awards is this army of girls who wants to do good. And with the support of people, with the divine help, we have been able to help 14,000 girls by rescuing them. To me, I've been blessed. I've had a lot of financial success in my life. But financial success does not give you a sense of fulfillment because financial success cannot be your purpose. I would love for you all to ask today, what is your purpose? Your purpose.
Not your role, not your duty, not your responsibility. You may have a duty to your family, a duty to your nation. That's duty. Your responsibility is to your employer, your organization, ICAI, your practice, the responsibility. But what is your purpose? And it does not mean that, oh, I'm 65 years old or I'm only 15 years old. You must ask yourself that question every single day. And one point, you will pick something, you will do something, you will start something, you will join something that will make you feel so good inside that you will not have that question anymore. You will know your purpose. At the end of this conversation today, I hope what I said inspires you. I hope that you, as influencers in the financial world, motivate people towards karmic investing. And I wish you not just good health, good fortune, but I wish you purpose. God bless. Thank you so much. I'm sure we all will find the purpose one day. As you said, connected to ourselves and connected to ourselves and love are very important in our life. I feel more in love with my kids when they sleep, and I feel really guilty about that. So definitely I will change, and I will try my best to be connect with my kids and everyone with the true heart. Yes, true. So what a wonderful session. 14,000 women has been empowered. So really grateful. Mr. Vivek has started his business journey at the age of 15, as we have just heard about it. And his businessman instinct is still alive. Let me show you his recent business venture, which is getting tremendous response across the world. As recently, it was featured in New York. Now let me not say it, let's experience it. Can we have the video, please? Welcome to Aqua Arc, where the majesty of Ras Al Khaimah's Jais Mountain meets the serene beauty of the sea. This is more than just a residence. It's a sanctuary of luxury and tranquility. From the moment you arrive, Aqua Arc exudes opulence. Our grand entrance, elevated 5 meters above street level, welcomes you into a double-height lobby adorned with lush plantations and cascading water features. Every apartment at Aqua Arc is fully furnished with elegant finishes and meticulous design. Our range of residences includes everything from cozy one-bedroom apartments to opulent penthouses. Experience breathtaking sea views and vistas of the world's largest resorts from many of our exquisite apartments. Our premium units feature private terraces with pools, providing a luxurious escape for the discerning resident. Aqua Arc provides world-class amenities, including an amphitheater for live performances, a recreational area for various activities, a state-of-the-art platinum gym, and a kids' splash pad for endless fun. Our community also features a barbecue area perfect for gatherings, a rooftop pool with stunning views, steam and sauna facilities for relaxation, and scenic walking trails for leisurely strolls. At Aqua Arc, you invest in more than just luxury. You secure your future at the heart of Al Marjan Island's elite community, just minutes from the world's largest resorts, Win. This prestigious location guarantees a high-value investment with high returns. Experience the epitome of luxury and serenity at Aqua Arc, where every detail is crafted to perfection, offering unparalleled views, exquisite amenities, and an investment in a lifestyle of elegance and peace. BMW Developments.
I would like to call upon Mr. Udit and our chapter chairperson CA Kamlesh and vice chairperson CA Kishore to come on the stage and facilitate our realty partners B&W Developments. Thank you so much. Now we will start the Q&A session. We will try to keep as short as possible. So, yes. Three of the village, one of the village which you adopted. One of my friend, he lost his parents. Still, he prays, he thinks you are his God. In fact, so nice of you. In fact, he's a fisherman. When you adopt that village, when you touch upon the Kadalur, the tsunami thing, because I went there around 2008, 2009. The way he said he lost his parents, he lost his sister. He was the only one who was survived in that tsunami. But when you adopted the village and the way you treated the whole village, it's close to 1,000 people who are there in the village. And you said, okay, it's more than, particularly you are come from the north. Basically, those people doesn't know initially when you came over there, they don't know that you speak Tamil. When you start speaking in Tamil and we are conversing, really it was amazing. And the way you have done the job during tsunami time in Tamil Nadu, it is heart-warming. A big round of applause for Vivek for helping the village in Nagapattinam. It's amazing. Thank you, Vivek, for such a wonderful nature which you have done to the people of Nagapattinam. Good evening. Yeah. Yeah, good evening. Vivek ji? I think he's busy. अच्छा उधर दूसरा माइक है हाँ yes sir Yeah, here. Actually, I would like to thank the today's meeting or the conference, because of which we came to know you more better, what you are, because before that we were knowing just you being an actor or a son of Suresh Oberoi ji. More than that we were not knowing, and we are really thankful to the conference, which inspires every one of us that how we should be connected to ourselves, like being part of this bigger conscious, and automatically we will get a purpose, like why we are here and what we can do for the society. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. You must thank Jay for dragging me here. Slightly jet lagged. Coffee pila ke leke aaya mujhe. Hi Vivek, I'm here. Vivek. No questions, just to compliment you. We know you as a great actor. With the little we know you being a celebrity, that you've had hardships in your personal life, so you're a great man. What you've shown today, must congratulate you. You're a great human being, and thank you for that. For that effort. Thank you. So, hi. Great initiative, very inspiring. We'd love to get involved with the Devi project. Is there a way where we can get involved in any way? Of course. How can we do that? Can you please? In fact, now you live here in Doha? Yeah, between Doha and a few other countries. Yeah, but please go ahead. I'm multinational, ho bhai aap. Yeah, so I'm setting up a structure in Dubai for a lot of people who feel inspired, because I have a rule where in any of the charitable things that I do, I don't take other people's money. Okay. I only put my money through my foundation. But if somebody wants to participate in the project, it's open to all. They can participate directly. Sometimes people find it difficult. They want to pool in a structure locally, like
We have a pool in the UK, we have a pool in Canada, we have a pool in US, where like-minded people have got together and said, यार एक structure बना दो, यहाँ तो tax का problem नहीं है, but वहाँ पे tax efficiency भी उनको चाहिए. You can set up your own pool, get a whole bunch of people together. I can send you all the information. Sure. Or you can join our pool that we have structured with BNW, because BNW is very CSR oriented. Right. Ankur and I both have a very strong sense of giving back. So you can join that pool also. Most welcome. And Yadu Mittal is here with me. He can guide you. Sure. We'd love to get involved in India also if possible. Say that again, please. In We'd India. love to get involved in India also if Yes, possible. the project will happen in India only. It's Okay. just that we Perfect, collect. I get that. Yeah. So we Thank create you. the pool together and then we send it to India. And then I would encourage you, go see what your money does. Sure. Go see the project. Banki Bihari ji ke darshan bhi kar lo. Right. Take your children along. Sir, actually, because sorry. Sir, काफी दिन से मन था, अभी it feel like a calling. बुलावा आ गया. Thank you. मैंने तो सिर्फ फिल्म की थी किसना, तो असली कृष्णा बुला रहा है. We'll take one last question. Yes, ma'am. Acha, no, you're helping with taking the mic around. Sorry, I thought you were going to ask a question. Should we conclude if nobody has any questions? Here. Ji. Yes, ma'am. Hi, Vivek. I am a die-hard fan of yours. Thank you so much. Only one request to have a photograph with you. Nothing else. My pleasure. Most important question. Yes. Thank you. My pleasure. If you I don't guys know. would like to facilitate that, bring a few groups of people here to take pictures together. Thank you very much for all the. Thank you. Thank you very Thank much. you for so much. such a Jai Hind. wonderful Thank you. session. I would like to call upon CA Kamlesh and CA Kishore to facilitate our mega superstar CA, not cinema actor, but chartered accountant. And I would like to request all our ExCom member also to please come on the stage. Yeah. And also I would like to request CA Ankit, our past chairperson, CA Ankit Agarwal and Gaurav Kakkar to be join us. अभी इन्होंने दोबारा CA की बात की. So I must say that today you're not just CA by qualification, but you have to be CA by action. What is CA by action? CA stands for change agent. You make the change. We request all the ladies to come on the podium. All the beautiful girls, sorry. Come fast.
Hello. Members, I request everyone to please sit down. We are yet to conclude our conference. One by one we'll call and you will. May I request all the members to please be seated and we'll call one by one, so you will have opportunity to take photograph with. Okay. Okay. Now I would like to hand over to our chapter's Vice Chairperson, C.A. Kishore, to take the proceedings further. Thank you. Thank you, Rajesh ji. And thank you, Vivek Oberoi ji. It was an insightful inspiration. It's touching up my heart as well as. Once again, as we come to close the remarkable Startup Search Seminar, it's my honor and privilege to extend a heartfelt vote of thanks to all those who have made this a resounding success. सपने वो नहीं जो हमें सोते समय देखते, सपने वो है जो हमें सोने नहीं दे. A dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. By ABJ Abdul Kalam. Let us keep dreaming, innovating, and transforming the future with startups. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed sponsors. Your generous support and commitment to fostering the innovation have been pivotal bringing this seminar into life. Special thanks to our annual gold sponsor, Aster DM Health Center, Morrison Qatar, our annual silver sponsor, Anwin Infosystems WLL, our conference silver sponsor, KPMG Qatar, Forbes Masar, Fusion Group Holding, Deloitte, our insurance partner, DAC, QIC, Qatar Insurance Company, our technology partner, Tally Solutions, Realty partner, BNW Developments, conference support partners, Kristen SVP Chartered Accountants, More, Lulu Hypermarket Qatar, Gulfar Al Misnad. And finally, our annual support sponsors, Capital Consulting, Arthursian Global, Focus Software Qatar, Alok K. Saxena and Partners. A heartfelt thanks to all our esteemed chief guest, His Excellency Sri Bibul, Ambassador of India to Qatar, and Saleh bin Majid Al Kulefi, and our ICA President C. Ranjit Kumar Agarwal, and our overseas delegates who have traveled from across the globe to be with us. This time, the representation from all GCC, as well as all past chairpersons of Doha chapter, attended this remarkable event. Your presence here has enriched our discussions and broadened in our perspective. We are immensely grateful for the insights and experience you have shared with us, which truly transformed our understanding of global innovations. We also extend our gratitude to the speakers and the panelists who have shared their knowledge, experience, and visionary ideas with us. Your contribution has sparked meaningful conversations and inspired us to think differently about future of innovation. To the organizing committees, your dedications, hard work, and meticulous planning have been the backbone of this seminar. From the initial concept to the final execution, your commitment has ensured that everything ran smoothly. Thank you so much for your tireless and making this event seamless and inspiring experience. Our heartfelt thanks to Hotel Hilton staff and crew who have provided us exceptional service and hospitality. Special thanks to Symphony Qatar team for their audio and sound,
and our photography team, Anish Grit, media coverage by Gulf Times and Account Printers. Last but least, a big thanks to all our attendees. Your enthusiasm and engagement and passion for innovation have made this seminar a vibrant and dynamic event. In conclusions, we are grateful to everyone who played a part in making this startup seminar for a memorable and impactful event. Let us carry forward the spirit of innovation and continue to transform our future together. As I mentioned on yesterday about quiz on startup in our souvenir, there are 33 members who were participated in this quiz. In that, 14 correct entries were there. Since we don't have any AI, we are using our local AI. It's called our spin wheel. May I request you, our backstage team, to spin the wheel and declare the winner of that first quiz on startup. This is our AI. Come, stage. May I request our treasurer, C.A. Devi Nandan, come to stage and hand over this prize to the winner. Thank you. Okay. Now, without AI, we are doing the manual. May I call you, the tally team, Raghu and team, come to the stage and take the manual raffle draw, and the winner will get Apple iPod. In future, they will definitely give iPad. Yeah. May I request our chapter secretary, C. Arun, come to the stage. Hello. Once again, I am asking you, can you guess who is the winner? I am starting with the first letter, M. S. Can I announce? MSP partner, Manigandan Rajan. Still there is chance for us. Again, it's starting with J. J. Now this time we are encouraging lady members here, okay? So we are announcing Jayanti Maheshwari. Again.
Yeah, thank you, Tile team. I think, ma'am, you have to stand here because 3 more gifts are coming, okay? Now, going back to our AIs, can you spin the wheel for the first Lulu voucher worth of 400 real? Asif Mahmood. आसिफ पैसा वसूल है. Can I request our backstage team please spin the wheel once again for the winner. Anil Kaur. Can you? Rohit Kumar Agarwal. May I request Rakesh come to the stage? As I mentioned earlier, please wait for 1 second as we prepare the final raffle draw. We will announce the mega winner of the conference. The winner will get Huawei Mate Up, valued over Qatar Riyal 1,300. Can you spin the wheel, please? Shashwant Tulasian. One more. Remove. Next. Nida Jolie. May I request to Chapter CA Chairperson CA Kamlesh Tiblewal come to the stage and hand over this. Finally, a big thank you note from the DCICAI Doha chapter for the wonderful seminar. I'm not spending that much time.
I am simply say the two words, CA. You got lot of definition for CA, but I am saying that come again for next event.